come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. Abhijet Iyer-Mitra, when the government in Uttar Pradesh says that people are being fooled when you have such halal tags on edible oil, on atta, on turmeric powder, I mean, what does turmeric powder, haldi have to do with a halal certification? So let me tell you how the economic scam in all of this works. Okay. Take something like yogurt, dahi. Okay. Every Muslim household in India eats dahi. I bet half our panelists here at least eat dahi. I think all 6 of our panelists here eat dahi. Okay. You eat nashpati, pear. Nashpati contains 0.4 mg alcohol per 100 grams of nashpati. There is not a single dahi on earth that does not contain 0.2 mg of alcohol, because the fermentation process of the lactobacillus itself produces alcohol. So the halal certificate given to certain dahi products in the market itself is, first of all, false. So what is the basis for the halal certificate? Is it any scientific measurement of alcohol content or anything like that? No. Okay. So this is your first indication that it has nothing to do with dietary laws. The second indication out here is the economic space grabbing that happens. Indians mostly know this as a meat product issue. Now, the problem with halal certification out there is all the butchers, the Hindu butchers who are overwhelmingly Dalits, have been completely kicked out of this business because the person slitting the animal's throat has to be a Muslim. The Muslim prayer has to be said. Therefore, fundamentally, a Hindu butcher cannot serve halal meat. This is the second issue in all of this. The third issue, there was a patent falsehood saying soaps in India do not contain animal fat. It was Mr. Godrej, the Parsi gentleman, who first came up with non-animal based soap in India. All Indian soaps are non-animal fat based. There is no basis for this here. The fourth issue out here is what has come up with halal certification is it is no longer about the primary dietary laws. They also want to apply financial laws, which again, like we saw with dahi, are selectively applied. Technically, the way halal certification is done today, expansive halal certification, the company producing the halal certification should not be charging interest, riba and things like that. Patanjali hasn't taken bank loans. They aren't paying bank interest. Who are we kidding? Amul doesn't take bank loans. They don't pay bank interest. Mother Dairy doesn't take bank loan and pay bank interest. So how are their products in halal certified? Okay. So there is an aspect here of economic exclusion. There is very clearly an aspect here of cartelization, as we've seen Dalits being kicked out of the butchery business. Okay. You also have the complete fraud of the halal certification itself. That dahi, nashpati and other things, daily consumables which have alcohol are being passed off as okay, I want Danish Qureshi to come in. Please hold on to that thought. I want Danish Qureshi to respond. So Abhijet Iyer-Mitra is saying that there's a fraud and economic scam happening. It creates confusion. It's only fooling people and looting people. So when an action is taken against this system, then why is it that the INDI bloc and others criticizing this are calling this anti-Muslim community or an attempt to create a Hindu Rashtra? स्वाति, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए जो तुषार मेहता जी ने जो कहा है, क्योंकि उस वक्त में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो मीट के और बाकी के भी जो बाय प्रोडक्ट थे बिल्कुल भी नहीं। एफएसडीए के जो ऑफिशियल है अनिता सिंह, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हलाल मीट पर कोई बैन नहीं है उत्तर प्रदेश में। टाइम्स नाउ पे हमने इस पे बहस कर दी थी। उस वक्त में उन्होंने तमाम जितने भी मॉल थे और जितनी भी प्राइवेट जगहें थी, सब जगह से वो प्रोडक्ट्स उठाए गए थे और बाद में जो क्लैरिफिकेशन है आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रही थी। एफएसडीए की ऑफिशियल जो कह रही है कि कोई हलाल मीट पर बैन नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन योगी सरकार ने ये बैन लगाना शुरू किया। मैं आपको जो वास्तव में स्थिति है उसकी आपको मैं बात बता रही हूँ। हलाल बैन ओनली फॉर कंपनीज सेलिंग पैकेज प्रोडक्ट्स, नॉट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। दिस इज व्हाट वाज सेड। एंड उसके बाद अनीता सिंह ने आकर के खुद कहा कि जो हलाल मीट है उस पर कोई बैन उत्तर प्रदेश में नहीं है।
नहीं, हमने देखा है और हमने इस पर बहस किया। चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस दिन हमने इस पे टाइम्स नाउ पे बहस की थी। अब सुनिए, मैं इसको आगे की बात मैं आपको बताऊं। आप मुझे बता रही थी सरिया और रॉड और ये कितने सारे ब्रांड हैं हमारे देश में सरिया बनाने वाले। त्रिशूल है और संख्या है, शंख है, न जाने क्या क्या है। तो आप मुझे बताइए, तमाम ही लोहा है, तो उनसे कहिए ना कि आप ब्रांड बंद कर दीजिए। भाई आप लोहा ही करिए, हम सरिया ही बेच रहे हैं। तो क्यों अलग अलग सरिये? हर कंपनी जो है अपनी तरीके वही तो बात हो रही है, वही तो बात हो रही है कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है। ये एक मार्केटिंग गिमिक है अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फंसाने के लिए, उनको ल्योर करने के लिए आप उस पर हलाल सर्टिफिकेशन लगा देते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा सर्टिफिकेशन कोई आपसे अगर मांगता है, देखिए आज हमारे पास ऑप्शन है, हम टाइम्स नाउ पे बैठे हैं। अरे भाई, किसी को टाइम्स नाउ के बजाय कोई दूसरा न्यूज भी देखना हो तो कोई पाबंदी तो है नहीं। लेकिन एक मिनट, ये तो आप उल्लू बनाने का काम करें ना लोगों को। सरिये पर, सीमेंट पर, आटे पर, खाने के तेल पर हलाल के सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफिकेट दे रही हैं, ये रजिस्टर्ड है चैरिटी कमिश्नर में। तो चैरिटी कमिश्नर में भी तो उसको बेनिफिट सारे रजिस्टर्ड नहीं होंगे ना सर, सारे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। और अगर रजिस्टर्ड है तो सवाल आपका वाजिब है कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दानिश कुरैशी ये एक्शन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ कैसे हो गया? इसमें इंटेंशन ये कैसे हो गया कि हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए चलिए इस व्यवस्था के खिलाफ हम और ऐसे लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं? नहीं, योगी जी की पूरी कार्यशैली अकेले योगी जी की कहां बात है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत मोहब्बत ज्यादा वातावरण बना के रखा है मोदी जी ने मुसलमानों के पक्ष में, और उनके पक्ष में होकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो ये तो अगर आप अपने व्यूअर्स को क्लैरिफाई करिए कि भाई मुझे कुछ क्लैरिफाई किसी को करने की जरूरत नहीं है। जनता जिसको चाहती है वो हर 5 साल में चुनाव इस देश में होता है, वो उसको वोट करके उसको चुन सकती है। उनको मोदी जी नहीं पसंद, योगी जी नहीं पसंद, अखिलेश जी नहीं पसंद, राहुल नहीं पसंद, वो फैसला वो कर सकते हैं। वो क्लैरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन बांटने का काम मेरा नहीं है। लेकिन जो सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं हलाल का, बहस उस पर चल रही है। I want to go across to रतन शारदा. The intention of the government is clear. Everybody knows, says Danish Qureshi. ये किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है. Swati, first of all, I must raise a very strong flag. I think Sanjay Verma is noting. Manoj Yadav made a very horrible statement, very criminal statement, saying that the money commission from cow meat goes to Yogi and Yogi gives it to the mutt. This is the most defamatory statement made on the TV, on the national channel. He must apologize. He must be charged with defamation, criminal defamation. Coming to second, this entire debate talking about Hindu-Muslim is wrong. This is pure and simple economics. This is economics of monopolizing, economics of creating a separate manufacturing base, a complete supply chain where other communities are excluded. This particular exclusion of the community, as Abhijet rightly pointed, right from the butchers to people are processing, manufacturing, they are slowly being pushed out of the business. Nobody has objected to certificate for the exporters. But what is the sense of making this? These are all halal mafias by people bringing in government. Government has tried to regularize this unabated increase in number of people who are giving certificates, minting money. There is the certificate cost is 50,000 per product. Then there is renewal fees, which is also very high. So, in fact, the halal certification business in India by 2023 was $5 billion for the kind information of others who don't remember. There is a company, there is an organization called MIHAS, Malaysia International Halal Showcase, which has which wants to increase the footprint of halal business. It is looking at of $113.2 billion by 2030, and exports out of this is 15.19 billion. So this entire game expanding the scope, which began with meat, has extended to food products, then to cosmetics, now to funnily enough to water, and even purely Ayurvedic products like these giloy, etc. So this has to be looked into. So when Yogi says that meat products are okay, but why there is halal on other businesses, I think this is a mafia trying to take grip over the business. And when you go outside, you get business. You get in even in air India. So you're saying the government is trying to regularize it, but there's an attempt to politicize.